हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत। तो आज हम देखने वाले सेशन नंबर 3, कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। जो कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है तो वो क्या काम करते हैं हम इसमें देखने वाले। अलाउज द प्रोग्राम मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो इसको प्रोग्राम को अलाउ करता है डिसीजंस के लिए, और हमारे जो ब्लॉक्स है उसकी कंडीशंस चेक करते हैं। हेल्प्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी enable programs to execute different blocks of code based on whether a specific condition returns true or false. This allows for decision making and dynamic behavior. उसके बाद हम देखने वाले types of conditional statements in C. If statement, if else statement, nested if else if ladder, switch case statement. उसके बाद हम देखने वाले if statement. The if statement is the simplest decision statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. Syntax: if condition, curly bracket open, double slash, if condition is true. Curly bracket close, hash includes studio.h, int main, int num, printf, enter a number, scan a %d, comma, and num, if num greater than 0, curly bracket, printf, ब्रैकेट द नंबर इज पॉजिटिव स्लैश एन। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एक फॉर्मेटिंग है। एल्स कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट को, सिंटैक्स जो है हमारा इफ कंडीशन जो है वो लिखते कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल स्लैश, ट्रू ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स ब्रैकेट ओपन, डबल स्लैश, ट्रू ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, hash includes studio.h, int min, curly bracket, int age, printf, enter your age, scanf, %d, and age, if age is greater than equal to 18। यहाँ पर देखिए हम एक कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट्स रहते हैं इसमें हम कंपैरिजन ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रिंट एफ में हम लिखते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट डॉट स्लैश एन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद जो एल्स है उसमें कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यहाँ पर स्लैश एन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद जो रिटर्न जीरो है वो है हमारा यहाँ, और जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो नेस्टेड इफ एल्स। उसको हम लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ईच मेन कर्ली ब्रैकेट int number प्रिंट एफ एंटर द नंबर स्कैन एफ में हम %d नंबर लिखते हैं if num greater than equal to 0, if num %2 is equal to 0, print f the number is even and positive dot n। तो इस प्रकार से उसको लिखते हैं। else curly bracket print f the number is odd and positive dot a slash n, curly bracket close, curly bracket else print f the number is negative और return 0। उसके बाद हम देख रहे हैं else if ladder कंडीशन है, इसमें हम देख सकते हैं hash include studio dot h, hash includes studio.h, int main, int marks, printf, enter your marks, scanf, %d, and marks. If marks greater than equal to 90, printf grade a slash n. Else if marks greater than equal to 75, printf grade colon b slash n। तो देख सकते हैं कि जो हमारा जो फॉर्मेट है स्विच स्टेटमेंट, switch case statement in an alternative to the if else if ladder switch block consists of cases to be executed based on the value of the switch variable. Example hash includes studio.h int day is equal to 2 semicolon switch day case on printf Monday %n slash n case 2 case 3 and 2। देखिए देख सकते हैं हम फॉर्मेट है हमारा केस 2 और केस 3 का। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, देखते हैं आगे एक लेक्चर में।